अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। श्री शिव उवाच। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनि कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्यु उवाच। शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया मया तवैव स्नेहेनाप्यं वा स्तुति प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। ओम ज्ञानिनाम् अपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिविशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिम अतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुख भयहानिका त्वदनिया सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। इति सप्तश्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण श्री जगदम्बिकायै चरणार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। पेज नंबर 9। ओम दुर्गा श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। ईश्वर उवाच। शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भवता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया च आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपा मनम बुद्धि निरहंकारा चित्तरूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावी भाव्या भव्या अभव्या सदा गति। शांभवी शाम्भवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वनदुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दनी मधुकैटभ हंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सत्य सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदं प्रपठेत् नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारी
पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेत् नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकुङ्कुमे गोरोचनालक्तककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिग्नो भवेत् सदा धारयते पुरारी भौमावास्या निशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम् इति श्री विश्वसारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् समाप्त। श्री जगदम्बिकायै चरणार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। 8 विधि में पेज नंबर 14 बदन मळ्यु। ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। એમાં નીચે જ સંકલ્પ છે, એમાં હું વાંચું છું એ જ બોલવાનું છે, ના ખબર પડે તો સાંભળજો, નો પ્રોબ્લેમ। ઓમ વિષ્ણુર્વિષ્ણુર્વિષ્ણુર્વિષ્ણુ ઓમ નમઃ પરમાત્મને श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे अमेरिका खंडे अनार्या आर्य नहीं अनार्या वर्तांतगत ब्रह्मावर्तैक देशे पुण्य प्रदेशे बुद्धावतारे वर्तमाने अमुक नाम संवत्सरे द्वितीय अयने महामंगल्य फलप्रदे आश्विन मासानाम उत्तमे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे आई थिंक आज चतुर्थी थी चतुर्थ तिथौ रवि वासरायान्विताम अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थिते सूर्ये अमुक राशि स्थितेषु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिषु सत्सु शुभे योगे शुभ करणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम काश्यप गोत्रोत्पन्नम पन्नः जोगेश दास गुप्ता अहम ममात्म तमे बधा पोतपोतानुं नाम बोलजो। अहम ममात्मन सपुत्र स्त्री बांधवस्य श्री नवदुर्गा अनुग्रहतो गहकृत राजकृत सर्व विद्य पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम श्री जगदम्बिकायै भक्ति प्राप्त्यर्थम नवदुर्गा प्रसादेन सर्वापन्न निवृत्ति सर्वाभीष्ट फल वाप्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीति अर्थम पछीनो शब्द बोलवानो नथी। कवच अर्गला कीलक पाठ पुराणोक्त रात्रि सूक्त वेद तंत्र नहीं पुराणोक्त रात्रि सूक्त पाठ न्यास विधि सहित निर्वाण
सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग न्यास ध्यान पूर्वकं च मार्कंडेय उवाच सावर्णी सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः इति आरभ्य सावर्णिर्भविता मनुः इति अंतम दुर्गा सप्तशती पाठम तदन्ते न्यास विधि सहित निर्वाण मंत्र जपम पुराणोक्त देवी सूक्त पाठम रहस्य त्रय पठनम च करिष्ये। सीताराम। 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 હવે પેજ નંબર કયું પેજ છે 19 પેજ 19 ઉપર આ દેવ્યા કવચ લખેલું છે. Yeah. I hope everybody found it. Yeah. Yeah, મળ્યું. મળ્યું. ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं जगदम्बा श्री जगदम्बा प्रीति अर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। ओम नमश्चंडिकाय। ओम श्री मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ओम ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किंचित् अशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशय प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दैव्य क्रोध समाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्गमायुद्धमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं दैवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी ऊर्ध्वं ब्रह्मा उदिच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्ताद् वैष्णवीस्तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखाम् उद्योतनी रक्षेत् उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्वनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपोलौ
कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षीं चीबुरं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवाया भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कंठे नलिकां नलकूबरी स्कंदयो खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अंबिका चाङ्गुलीषु च नखात् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनशोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मिढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलेषु श्री रक्षेत् पादात् हस्तलवासिनी नखान् त्रंष्ट्राकराली च केशांश्चैर्वोर्ध्वकेशनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमाजा वसमांसानि अस्थि मेदांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे न कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु शूकं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेत् नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशुन्मे रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानं सुपथा रक्षेत् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतस्तथा रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत् तु यदि इच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृत नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजय सार्वकामिक यं यं चिन्तयेते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेष्व पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु दिव्या कवचम् देवानाम् अपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराखे चराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजाकुल जामाला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चराघोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वैताला कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचेरुदि संस्थिते मान्योन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वां तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ओम
इति श्रीदेव्या कवचम संपूर्णम श्री जगदंबिकाय चरणार्पणमस्तु। ત્યાર પછી તરત જ અર્ગલા સ્તોત્ર છે। અથ અર્ગલા સ્તોત્રમ ઓમ અશ્ય श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य श्री विष्णु ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यै सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोग। ओम नमश्चण्डिकायै। श्री मार्कण्डेय उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिधारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधु कैटभ विद्रावी विधातृ वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीज वधे देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि शुंभस्यैव निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि वंदितांध्री युगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिंत्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि चंडिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्तीह भक्तितः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि परमं सुख देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि द्विशताम्नाशम विदेहि बलमुच्चकै। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमां श्रियम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुर रत्न शिरो रत्न निदृष्ट चरणेम्बिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरुः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वत भक्त्या सदाम्बिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुता नाथ संस्तुते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचंड दौर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानंदोदयंबिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देवी मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम्। ओम एते श्री देव्या अर्गला स्तोत्र संपूर्णं श्री जगदंबिकायै चरणार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। एना પછી તરત જ કીલક છે। अथ कीलकम ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीति अर्थम सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। ओम नमश्चण्डिकायै। श्री मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सौमार्धधारिणे सर्वमेतत् विजानीयात् मंत्राणाम् अभिकीलकम्
सोऽपि क्षेमम् अवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्ति उच्चाटनादीनि वस्तुनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचित् अपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वम् उच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च कूप्तं चकारस समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावत् नियन्त्रणां सोऽपि क्षेमम् अवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्या वा समाहितः ददाति ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्किलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवा अपि तटस्थस्य भयं क्वापि इह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षम् अवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधे सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यम् इदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकै भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपद शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते सा न किं जनैः ओम इति श्रीदेव्या किलकं स्तोत्रम संपूर्णं श्री जगदम्बिकायै चरणार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। पेज नंबर 3 43 सॉरी या बराबर 43वां पेज। अथ No, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम बदन जड़्यू what about 41 other Vedakom Ratri Sukta? no 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 Okay. 43 43 रात्रि सुक्तम जगदम्बा do you find या मोड़ी बधाने जगदा मोड़ी बधाने ओके चालू ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर अतुलां तेजसः प्रभु श्री ब्रह्मो उवाच त्वं स्वहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी पराः त्वयैतत् धार्यते विश्वं त्वयैतत् सृज्यते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देवीं त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा दृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संरतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महाश्रुति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभागिनी कालरात्रिर्महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्ति एव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणभुषुंडी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु सत्सत्त्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रा वशं नीतः कस्त्वां स्तोतुम् इहेश्वर विष्णु शरीर ग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्
मोहयैतौ दुराधर्षौ असुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमैतौ महासुरौ इति श्रीराक्तिसूत्रम् श्री जगदम्बिकायै चरणार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्, 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 हरि ओम तत्सत्। हरि ओम निर्वाण विधि पेज नंबर 52 52 you can see my screen here on Zoom. મળ્યો. Yeah. ओम श्री गणपतिर्जयति ओम अस्य श्री निर्वाण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषयः गायत्री पुष्णिक अनुष्टुप छंदांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीति अर्थे जपे विनियोग। तो ऋष्यादि न्यास करवाना નથી, કર ન્યાસ પેજ 53 પર છે, જુઓ અહીંથી શરૂ થાય છે. યુ કેન સી માય સ્ક્રીન. Yeah. ઓમ ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः ओम चामुंडायै अनामिकाभ्याम नमः ओम विच्चै कनिष्ठकाभ्याम नमः ओम ऐं ह्रीं करतल करपुष्टाभ्याम नमः। એના પછી તરત જ નીચે હૃદયાદિ ન્યાસ છે, જુઓ. Yeah. ओम ऐं हृदयाय नमः ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा ओम क्लीं शिखायै वौषट् ओम चामुंडायै कवचाय हुम ओम विच्चै नेत्रत्रयाय वौषट् ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै अस्त्राय फट्। अक्षर न्यास નથી કરતા, દિક ન્યાસ. I hope everyone fine. Yes. પેજ 54 ના છેલ્લામાં છે. મળ્યો. दिग्न्यास ओम ऐं प्राच्यै नमः ओम ऐं आग्नेयै नमः ओम ह्रीं दक्षिणायै नमः ओम ह्रीं नैऋत्यै नमः ओम क्लीं प्रतीच्यै नमः ओम क्लीं वायवे नमः ओम चामुंडाय उदिच्यै नमः ओम चामुंडाय ऐशान्यै नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ऊर्ध्वायै नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै भूम्यै नमः। ત્યાર પછી ધ્યાનના 3 શ્લોક પેજ 55. खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघात शूलं पुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवै महाकालिकां यामस्तौ स्वपितै हरौ कमलजौ पन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवै सैरिव मर्दिनीमिह लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहनानि शङ्खमुशले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधतिं धनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा
पूर्वामत्र सरस्वती बनुभजे तुम्बादिदैत्यादिनीम् ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। હવે મંત્રનો જાપ કરવાનો છે અને મંત્રની માળા મારી પાસે છે જ, હું કરું છું. મંત્ર છેલ્લે નીચે આ જ પેજ ઉપર છેલ્લે નીચે મંત્ર લખ્યો છે, ઓમ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै 108 વખત. ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। પછી પેજ નંબર 56 ઉપર એક મંત્ર છે, ગુહ્યાતિ ગુહ્ય ગોપ્તૃત્વમ ગૃહાણાસ્મકૃતમ જપમ સિદ્ધિર્ભવતુ મે દેવી ત્વત્પ્રસાદાન મહેશ્વરી। હવે એ જ પેજ પર સપ્તશતી ન્યાસ નીચે છે તરત જ, પ્રથમ મધ્યમોત્તર ચરિત્રાણામ ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषयः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः गायत्री उष्णिक अनुष्टुप छंदांसी नंदा शाकंभरी भीमा शक्तयः रक्तदंतिका दुर्गा ब्राह्मयोर्बीजानि अग्नि वायु सूर्यास्तत्वानि ऋक् यजु सामवेदाध्यानानि सकल कामना सिद्ध्ये श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीति अर्थे जपे विनियोगः। ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदीनी चक्रिणां तथा चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण पुशुंडी परिधायुधा ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन न पाहि चापज्यानि स्वनेन च ओम तर्जनीभ्यां नमः। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथैश्वरी ओम मध्यमाभ्यां नमः। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम्। ओम ओम प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथैश्वरी ओम मध्यमाभ्यां नमः। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ गौराणि तैरक्षास्मां तथा भुवम्। ओम अनामिकाभ्यां नमः। ओम खड्गशूलगदादीनि ज्ञानि चास्त्राणि तेम्बिके करपल्लव संगिनी तैरस्मान् रक्ष सर्वत ओम कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यासराहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते ओम करतल कर पुष्टाभ्याम नमः। ઉપર જે મંત્ર લખ્યા છે એ જ મંત્ર ફરીથી બોલવાના છે, પણ હૃદયના ન્યાસ કરવાના છે એનાથી। ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदीनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण पुशुंडी परिधायुधा ओम हृदयाय नमः। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन पाहि चापज्यानि स्वनेन च ओम शिरसे स्वाहा। ओम प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथैश्वरी ओम शिखायै वौषट्। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ गौराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम्। ओम कवचाय होम। ओम खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तैम्बिके करपल्लव संगिनी तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ओम नेत्रत्रयां वौषट्। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते ओम अस्राय फट्। ત્યાર પછી તરત જ ધ્યાનનો શ્લોક છે। ओम विद्युद्धाम समप्रभां मृगपति स्कंदस्थितां भीषणा कन्याभिः करवालखेट विलसत् हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणाम् अनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। पेज नंबर 59। આવું મારા જેવું પેજ છે, જુઓ પ્રથમ અધ્યાય લખ્યું છે, અથ શ્રી દુર્ગા સપ્તશતી।
Everyone प्रथमोऽध्याय found, right? Om Shri મળ્યું. Durgayai Namaha. अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः ऋषिका विनियोग। ओम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः श्री महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति श्री रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली महाप्रीति अर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोग ध्यानम। ओम खड्गम चक्रगदेषु चाप परिघात शूलं पुशुंडिं शिरः शंखं संदधतिं करे स्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवै महाकालिकां यामस्तोत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। पेज 60। ओम नमः चंडिकायै। ओम ऐं मार्कंडेय श्री मार्कंडेय उवाच सावर्णी सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्टम निशामय त्वदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिप स बभूव महाभाग सावर्णिस्तनयो रवै स्वारिचोषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवम् सूरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् पुत्र प्रजापुत्राणि वौरसान् बभूवु शत्रवो भूपा कोला विध्वंसिनिस्तदा तस्य तैरभवत् युद्धम् अति प्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगव्याजेन हृत्स्वाम्य स भूपति एकाकी हर्मारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षित् विजवर्यस्य मेधस प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ किञ्चित् स कालं च मुनिना तेन सत्कृतम् इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मद मम वैरेवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसाद धन भोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्ति अन्यमहिवृताम् असम्यक् अव्ययशीलैस्तैर् कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शस सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः शशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारे निरस्तश्च धनलोभाद् स असाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनभ्यागतो दुःखे निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मे सुता राजो उवाच
निरस्तो भवाम लुब्धै पुत्रदारादिभिर्धनै तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसं। वैश्य उवाच एवमेतत् यथा प्राह भवान् अस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मन यैः संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजन हार्दं च हार्दितेष्वेव मे मन किमैतत् नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरम्। श्रीमार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्यौसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा कांश्चिन् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजो उवाच भगवन्स्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायात् ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्यङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमैतत् मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष यथाहं च द्वौ अपि अत्यन्तदुःखितौ द्रष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किं मे तत् महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकानन्दस्य मूढता। श्रीऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचित् रात्रावन्धास्तथा परे केचिद् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यद्रष्टय ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयो ज्ञाने अपि सति पश्यैतान् पतङ्गाच्छावचञ्चुषु कणमोक्षाद्रुतात् मोहात् विद्यमानानपि क्षुधा मानुषमनुजव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रति उपकाराय नन्वैतान् किं न पश्यसि तथापि मम तावत्तैर्मोहगर्तैः निपातिता महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरिश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानि ओम ज्ञानिनाम् अपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादात् कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगत् एतच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तैर् हेतुभूता सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वैश्वरेश्वरी। राजो उवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथम उत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तौ ब्रह्मविदां वरः। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वम् इदं जगत् ततं तया सर्वम् इदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधां श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्य अपि अभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येक जगत्यैक
जगत्येकार्णवीकृते आस्तीर्य शेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वौ असुरौ गौरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणम् उद्यतौ स नाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा जगत्पति ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा त्वौ असुरौ चौग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामैकाग्रहृदय स्थित विबोधा विबोधनार्थाय हरैर् हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णुर् अतुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संरतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं ह्री त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिः त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुषुण्डी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद् वस्तु सत्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुम् इहेश्वर विष्णु शरीर ग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैश्वैर् उदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरो ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकैटभो नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रस निर्गम्य दर्शनेस्तस्थौ ब्रह्मणो अव्यक्तजन्मन उतस्थौ च जगन्नाथ स्तया मुक्तो जनार्दन एकार्णवै हि शयनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानौ अतिवीर्य पराक्रमौ क्रोधरक्ते रक्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पंचवर्ष सहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्यति बलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ उक्तवन्तौ वरस्मतो व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवान् उवाच भवेताम् अद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धे वृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्याम् इति तदा सर्वम् आपोमयं जगत् विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहि न यत्रोर्वि सलीलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वेच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषां समुत्पन्ना ब्रह्मणा स्तुता संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या दिव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ओम् इति श्री मार्कण्डेय पुराणे
सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्यै मधुकैटभ वधु नाम प्रथमोऽध्यायः। श्री जगदम्बिकायै चरणार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। अथ द्वितीयोऽध्यायः। પછી તરત જ બીજો અધ્યાય છે વિનિયોગ। ઓમ મધ્યમ ચરિત્રસ્ય વિષ્ણુ ઋષિः महालक्ष्मीर्देवता पुष्टिच्छन्द शाकंभरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्री महालक्ष्मीर्प्रीति अर्थं मध्यम चरित्र जपे विनियोग। ओम अक्षस्रक् परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसन्नाननां सैवै सैरिवमर्दिनीमिहमः लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभुद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषे असुराणाम् अधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यै दैवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून् महिषासुर। ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृतं तयोस्तद्वत् महिषासुरचेष्टितम्। ईदशा कथया मासुर्देवाभिभव विस्तरं सूर्य इंद्र अग्नि नीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवातिष्ठति। स्वर्गात् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। एतद्व कथितं सर्वममरा विचेष्टितं शरणं व प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदन चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ। ततो अतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् तत निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत। अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तम् इव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्त दिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भुन्नारि व्याप्तलोकत्रयं त्विषां यद्भुत्शाम्भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखं च याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चेन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुव ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्य कौबरेण च नासिका तयास्तु दन्ता सम्भुत्ता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जग्ने तथा पावकस्तेजसा उवोच सन्ध्ययोस्तेज श्रवणौ अनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां संभवस्तेजसां शिवा। ततः समस्तदेवानां तेजो राशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुर् अमरा महिषार्दिता। शूलं शूलात् विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रत शङ्खं च वरुणं शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णै तथैषुधि वज्रमिन्द्र समुत्पाद्य कुलिशादमराधिप ददौ तस्य सहस्राक्षौ
घंटाम ऐरावताज गजात कालदंडाद्यमो दंडम पाशम चाम्बू पतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां च प्रजापतिश्चा अक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलम् समस्त रोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकर कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्मं च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं मजरे हारम् अजरे च तथाम्बरे चूडामणिंस्तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरां सर्वबाहिषु नूपुरौ विमलौ तद्वत् ग्रैवय ग्रैवयकम् अनुत्तमम् अंगुलीयकररत्नानि समस्ता स्वंगुलीश च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्य अनेक रूपाणि तथा अभेद्यं च दंशनम् अमलान् पंकजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पंकजं चाति शोभनम् हिमवान वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूरया पानपात्रं धनाधिप शेषश्च सर्वनागेशो महामणि विभूषितं नागाहारं ददौ तस्यै दत्तेय पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सन्मानिताननादोच्चै सट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृत्स्नम् आपूरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महान् भूत् चक्षुभु सकला लोका समुद्राश्च च कंपिरे चचाल वसुधा चैलु सकलाश्च महीधरा जयेति देवाश्च मुदा तामुचु सिंहवाहिनीं तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्ति नम्रात्ममूर्तय दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारय सन्नद अखिल सैन्यास्ते समुतस्थु उदा युधा आह किमै तदिति क्रोधात् आभास्य महिषासुर अभ्यधावत तं शब्दम असुरैर्वृतः सदर्दश ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां शोभिताशेषपातालं धनुर्ज्ञानी स्वनेन ताम् दिशो भुज सहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रवृत्ते युद्धं तया दिव्यासुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैर् आदिपित दिगंतरं महिषासुरसेनानि चिक्षुराख्यो महासुर युधे चामरश्चान्यै चतुरंग बलान्वित रथानाम् अयुते षड्भिर् उदग्राख्यो महासुर अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनु पंचाशद् अभिश्च न्यूतैर् असिलोमा महासुर अयुतानां शतैर्षड्भिर् बाष्कलो युधेरणे गजवाजे सहस्रौघैर् अनेकै परिवारित वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् अयुध्यत बिडालाख्यो अयुतानां च पंचाशत् अभिरथायुतै युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारित अन्ये च तत्रायुतशो तथा नागहयैर्वृता युधौ संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटि सहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतौ युद्धे तत्र भुन्महिषासुर तौमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधु संयुगे देव्या खड्गै परशुपट्टिशै केचिच्च चिक्षिपु शक्ति केचित् पाशांस्तथा परै देवीं खड्गप्रहारैस्तु एतां हन्तुं प्रचक्रमु सापि देवी ततस्तानि सहस्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निज शस्त्रास्त्रवर्षिणि अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमुचासुरदेहेषु सहस्राण्यस्त्राणि चैश्वरी सोऽपि क्रुद्धोस्तुत्सटो देव्या वाहन केसरी
चचारासुर सैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासान् मुमुचे यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका त एव सद्य सम्भूता गणा सहस्रश युधस्ते परशुभिर्बिन्दिपालासि पट्टिशै नाश्यन्तो असुरो गणान् देवी शक्त्युपबृंहिता अवादयन्त पट्खान् गणाः शङ्खांस्तथा परे मृदगांश्च तथैवान्यै तस्मिन् युद्ध महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भूविपाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परै विपोथिता निपातेन गदया भूविशेरते वेमुश्च केचित् रुधिरं मुसलेन वृषं हता केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा शरोघेण कृता केचित् रणाजिरे शेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दना केषाञ्चित् बाहवश्चिन्ना छिन्न ग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्न जङ्गांस्त्वपरे पेतुरुव्यां महासुरा एकबाह्व बाहु अक्षिचरणा केचिद्देव्या द्विधा कृता छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कबन्धा कबन्धाद्युधुर्देव्या गृहीत परमायुधा नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिता कबन्धाश्छिन्न शिरसि खड्गशक्त्युष्टिपाणय तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवीम् अन्ये महासुरा पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्र भुत्स महारण क्रोणितौघा महानद्य सद्यस्तत्र प्रसृष्टुः मध्ये चासुर सैन्यस्य वाजनां क्षणेन वारणासुरवाजिनां क्षणेन सैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं तथा वह्निस्तृणदारु महाचयम् स च सिंहो महानादम् उत्सृजन् दूतकेसर शरीरेभ्यो अमरारीणाम् असूनीव विचिन्वति देव्या गणेश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरै यथैषां तु तुर्षु देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्याय श्री जगदम्बिकायै चरणार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। अथ तृतीयोऽध्यायः ओम उद्यत भानुसहस्रकान्तिम् अरुण क्षौमां शिरो मालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्याम् अभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसत् वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रवीन्द्रस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुर सेनानी चिक्षुरः कोपात् ययो योद्धुमथाम्बिकां स देवी सरवर्षेण ववर्ष समरे सुर यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयद तस्य छित्त्वा ततो देवी निलयैव शरोत्करान् जगान्तुर्गान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च तनु सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वा नमाशुगै संच्छिन्न धन्वा विरथो हताश्वो हतसारथि अभ्यधावत्तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुर सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्यै देवीम् अपि अतिवेगवान्
पश्य तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल रूपनंदन ततो जग्राह शूलं स कोपात् अरुणलोचन चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुर जाज्वल्यं तेजोभिरवि बिम्बमिवाम्बरा बिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा तत् दृष्ट्वा तदा पतत् शूलं देवी शूलं ममुच्यत तत्शूलं शतधातेन नीतं स च महासुर हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रीदशार्दन सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतं हुङ्कारां विहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साक्षिणत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रीदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महिं गतौ युधातेर् युधाते अति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणै ततो वेगात् क्रमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उद्रगश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हत दंश दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातित देवी क्रुद्धा गदापातैः चूर्णयामास चोद्धतम् वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्तकम् उग्रास्यम् उग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालास्यासिनाकायात् पातयामास वैशिर दुर्धरं दुर्मुखं चौभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुर माहिषेण स्वरूपेण नाशयामास तान् गणान् कांश्चितन् कांश्चित् कांश्चित् कुण्डप्रहारेण खरक्षूपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चित् अपरात् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकम् अभ्यधावत सोऽसुर सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपात् वीर्यः पूरक्षुण्ण महीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चान् चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमण विक्षुण्णा महितस्य व्यशीर्यत लाङ्गुलेन हतश्चाब्धि प्लावयामास सर्वतः द्रुतशृङ्ग विभिन्नांश्च खण्डं खण्डं ययोर्धना श्वासानिलास्ता शतशो निपेतुर्नभसो अचला इति क्रोधसमात्तं आपतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो अभवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायके तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः शोभुन्महागज करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च करस्तस्तु करं देवी खड्गेन निरकृतन्त ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जाहासारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धुत विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहिस्तांस्तेन
चूर्णयन्ती क्षरोत्करे उवाच तं महोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरं दिव्यो उवाच गर्ज गर्ज क्षुणमूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतै तत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सा आरूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलैर्नयनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखान्ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृत अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुर तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं न नाशयत् प्रहर्षं च परं जग्मु सकला देवतागणा तुष्टुवुस्तां शुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्व पतयो ननृतश्चाप्सरो गणा ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्री जगदम्बिकायै चरणार्पणमस्तु। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ध्यानम् ओम कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मूलिबन्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करेरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ओम ऋषिर्वाच चक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टवु प्रणतिनम्रशिरोधरांशा वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहा देव्या यया ततमिदं जगदात्म्यशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सानः यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय च अशुभभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मे तत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर् न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च सुतृप्तिहेतुर् उच्चार्यसे त्वमत एव जने स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारै
मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका विमलर्घ्यजुषां निधानम् उद्गीतरम्य पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्तां च सर्वजगतां परमार्थिहन्त्री मेधासि देवी विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागर नौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवि सद्य प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् केजिर्व्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवति भाव परमा भव देवी प्रसीद परमा भवति भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञानमेतदधुनैव यदस्तमे तत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त निवृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि इत्यादृत प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवितेन दुर्गे स्मृता हरिस्वीति श्मशेषजन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभवका हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता एतैर्हि हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान्विनहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकृति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत्प्रणिनोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रै शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदैतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यै वीर्यं च हन्तृरुतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयैत्थम् केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा स्मरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन
नीतादिवं रिपुगुणाभयं भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मद सुरारिभवं नमस्ते। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन न पाहि चापज्ञानी स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथैश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ गौराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। ऋषिर्उवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यै कुसुमैर्नन्दनोद्भवै अर्चितां जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनै भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यै धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान्। देव्यो उवाच व्रीयतां त्रिदशा सर्वे यदस्मतो विवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चित् अवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुर् महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापद यश्च मर्त्यस्तवैरेभिः त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तत् रुद्धि विभवैर्धन दारादि संपदां वृद्ध्यै स्मत् प्रसन्नात्वं भवैथा सर्वदाम्बिकै। ऋषिर्उवाच इति प्रसादिता दैवैर्जगतोऽर्थे तथात्मन तथैत्युक्त्वा भद्रकाली बभूर्वान्तर्हिता नृप इत्येतत् कथितं भूप सम्भूतासा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुत्थिता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भ निशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी तच्छृणुष्व मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी माहात्म्ये शक्रादि स्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री जगदम्बिका चरणार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।